वेलकम टू एचपीजी के स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले जीओए और क्लर्क के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। The word computer has been derived from which of the following language? कंप्यूटर शब्द को किस भाषा से लिया गया है? तो कंप्यूटर को लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये एक कंप्यूटर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। Which of the following is the correct order of the four major function of a computer? कंप्यूटर के 4 मुख्य फंक्शंस क्या हैं? तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज कंप्यूटर के मेजर फंक्शंस हैं। कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, कंप्यूटर क्या परफॉर्म नहीं कर सकता? थिंकिंग। अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कंप्यूटर इनमें से क्या परफॉर्म नहीं कर सकता? बेक ए केक। पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर्स ऑफ पार्ट्स ऑर्डर आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसिंग। बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर आर, कंप्यूटर के क्या फ़ायदे हैं? वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, इसमें आप बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज़, अनप्रोसेस आइटम के कलेक्शन को क्या कहते हैं? तो इसे डेटा कहते हैं। जब ये प्रोसेस हो जाता है तो इसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ एन इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज? डेटा। Which is data that has been organized and presented in a meaningful fashion? Information. Data or information used to run the computer is called none of the above. The steps and tasks needed to process data, such as responses to questions or clicking an icon, are called instructions. The earliest calculating device is, सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है? अबेकस। अबेकस कैन परफॉर्म, तो ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकता है, बोथ 1 and 2। द नेपियर्स टेक्नोलॉजी यूज फॉर कैलकुलेशन कॉल्ड, इसे रेप्टोलॉजिया कहते हैं। पास्कलाइन इज ऑल्सो नोन बाय adding machine. Punched cards were first introduced by Jacquard. Which of the following is known as father of computer? Charles Babbage. Analytical engine developed by Charles Babbage. The analytical engine developed during first generation of computer used which has a memory unit, तो ये काउंटर व्हील्स को मेमोरी यूनिट के लिए यूज़ करता था। Tabulating machine was the first electromechanical machine developed by Herman Hollerith. Who designed the first electronic computer ENIAC? Presper Eckert, John W. Mauchly. The first computer which provides storage is EDSAC. Name the first general purpose electronic computer. UNIVAC, Universal Automatic Computer. Computer size was very large in first generation of computer. First generation computer were based on vacuum tubes. Computer built before the first generation computer was electromechanical computer. First generation computer used which language? Machine language.
Speed of first generation computer was in microseconds. The period of the second generation computer was 1956 to 1963. ये अलग अलग बुक्स पर अलग अलग दिया होता है. Time sharing became possible in which generation of computer? Second generation. Integrated chips or ICs were started to be used from which generation of computer? Third generation में ICs का यूज़ किया गया था. Chip is a common nickname for a integrated circuit. The third generation computer were made with integrated circuits. Integrated circuit or chips used in computer are made with silicon. A complete electronic circuit with transistor and other electronic components on a small silicon chip is called a integrated circuit. PCs are considered fourth generation and contain microprocessors. और माइक्रोप्रोसेसर का यूज़ एज ए प्रोसेसिंग डिवाइस फोर्थ जनरेशन में किया गया था. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज़ सिद्धार्थ. अगर पूछा जाए फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज़, देन आपका आंसर होगा परम. कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय जॉन वॉन न्यूमैन. Who developed integrated chip? J.S. Gilby. In latest generation computers, the instructions are executed parallel and sequentially both. Microcomputer hardware consists of three basic categories of physical equipment: system unit, input output, and memory. Which of the following option correctly expresses the meaning of the term PCs? Personal computer widely available to individual workers with which they can access information from layer systems and increase their personal productivity. Which of the following is a small microprocessor based computer designed to be used by one person at a time? Personal computer. Tablet PC is a type of microcomputer. Computers that are portable and convenient to use for users who travel are known as laptops. Desktop and personal computer are also known as microcomputers. Which of the following use a handheld operating system? APDA, Personal Digital Assistant. तो ये रही हमारी आज की वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.